You're there with me? Okay, so let's begin with linear programming problem. I believe you have done linear equations in the school. Linear equations, yes. So, yeah, linear equations. Yes. Any idea what linear equations are about? Where there are two variables, x, y. There are two variables, right? So there is a relationship between these two variables. Okay. So similar to linear equations, linear programming technique also helps us in determining how limited resources in a business can be used to attain specific objectives. Okay, so yesterday we had done those objectives, business objectives. Hope you all remember. Number one, maximizing profit. In business we always aim at maximizing profit. Number two, it's minimizing cost. We aim at minimizing the cost in business. Third, uh, minimizing the time, right? So the same thing we are going to follow in LPP. Okay, it's a mathematical technique that we are going to learn. Okay, so maximum profit, minimum cost, minimum time, also maximizing the revenue. Okay, so before we do with this industrial applications, I think we need to move on to the sum. Okay, so that would be a better. This is the formulation part, the first part of your LPP sums. Okay, so we are just going to formulate the LPP, right? So I'm just putting down the question for you. Okay, this is not the actual sum, this is just the formulation. So a factory manufactures two products A and B. Okay, uh, to manufacture one unit, so to manufacture one unit of A, 1.5 machine hours are required, and 2.5 labor hours are required. I hope you understand this. Machine hours and labor hours. What are machine hours? What are machine hours? What are machine hours? Running of machine. And what about labor hours? Labor work time. Okay, so you see this now. I've put up the problem. Now there is a difficulty in the sum. It says that in a month 300 machine hours are available. What do you mean by this?
300 machine hours and 240 hours are available. What do you mean by this? एक महीने में 300 मशीन आवर्स और 240 लेबर आवर्स अवेलेबल रहेगा, मतलब लेबर कितना टाइम काम कर सकता है? लेबर कितना टाइम काम कर सकता है पूरे मंथ में? या चरण, you can only use 300 hours of machine time. Very good. So what is that 300 hours? Is it minimum 300 hours or it is maximum 300 hours? Is it minimum 300 hours or it is maximum 300 hours? Yeah, very good. So I hope, see this you have to understand in this statement, because whatever I'm going to write now will be in form of variables. Okay, so I'm just finishing the question. Yes, and what about labor hours? Maximum labor hours available are, maximum labor hours available are 240. Clear with that? So I hope you understand from the statement. Okay, the next part, that is we completed. Profit per unit for A is 50 and for B is rupees 40. Formulate linear programming problem. Okay. Yes. So again, this is just the formulation part. So these are not actual sums which we are going to do. The actual sums which we will be doing, I will upload that for your reference. Yesterday somebody had asked me, so I will do that. Okay. So as of now, we are going to just solve this LPP how. Okay. Yes. So there are three parts of the sum. If you look at this terminology, okay, I hope you have taken a look at the question. I hope you have taken a look at the question. Yes. A factory manufactures two product. Okay. A and B. Fine with that. So kind of a problem, this kind of a problem is called as a product decision problem, where we are going to finalize whether how much quantities we have to manufacture for A and how much quantities we have to manufacture for B. Is it understood? Is it understood? So we don't know how much we have to manufacture. यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितना मैन्युफैक्चर करना है. We have to finalize how much is the number we have to do so that we get a maximum profit. Now why I call it as a maximum profit? There must be some reason for that. Yes, you know, these are the rules which I had given. If you take a look at the slide, there are some rules to be followed. Yes, what are we supposed to do? Whenever we see profit, we will have to use what? Maximization. Okay, cost, minimization, time, minimization. Is that clear? Okay, so please remember these principles before solving the sum. Without this, you cannot solve the sum. Okay, the ideology of solving all the LPV problems for formulation is one and the same. You just need to understand the statements. There are three components for the problem. Number one, decision variables. Number two, objective. Number three, constants. So let's start with decision variables. So any problem, there may be a product. Okay, so just as in this problem, we have a product called A and B. If you see this, you have A and B, isn't it? So this is the product, decision variables. You have to make a choice of products. You see these applications, product mix decisions, product scheduling, product distributions, portfolio selection, media selection, traveling salesman problem, staffing problem, airline routing, diet problem, farm planning. So these are types of problems. So applications are nothing but these are
types of problem. All problems are one and the same, just the product changes in every problem. Okay, so let's begin with first decision variables. Let's say there are product A and B. Okay, so how we will establish a relationship of A and B? What we are going to do is we are going to just make a imaginary variable called x and y. Okay, and we are going to consider this A as x and B as y, so that we establish a relationship. Normally जब स्कूल में इक्वेशन किया था तो x और y से ही किया था, right? Hope you remember the equation, simultaneous equation which you have done in the school. You had this kind of equations, x plus y is equal to 4. Okay, so the same way, these all things you all know. Okay, this is just the application part now. Yes. Next part is objective function. Question में या problem में you will be given objective. Now in this entire question, is there any objective? Is there any objective out of these? Any three rules? These three. Do we find any one in the question? Out of these three, do we find any one in the question? Time? No. There is profit. Time is given, but see, you are not maximizing the time or minimizing the time. That is given to you in the question. Your profit per unit is the objective. Okay, the end part over here, profit per unit. So that is the objective. Yes or no? So in this question, what is the objective function? Objective function is objective function is profit. Okay. Yes. Objective function is profit. So how we write that? That will look. Yes. So profit per unit is done. Now this all part, okay, to manufacture 1 unit of A, to manufacture 1 unit of B. Hmm. So this is the constant part. You understand what are constants? What do you understand by the word constraint? So objective will be profit, time, cost. Is that clear? And constant is a difficulty. Is there any difficulty in the question or a problem? Is there any difficulty? So there is a difficulty for 300 and 240. Yes, 300 and 240 are the difficulties that you can only up to 300 machine hours do the work, to 40 labor hours do the work. Okay, so now let's begin with the problem. I believe the concept is very much clear to you. Okay, so first, always when we start the problem, we start with decision variables. So here we write decision variables. Okay, here we write decision variables. So how I'm going to write is, let number of units of A be x, and let number of units of B be y. Is that clear to you? Yes. Is that clear to you? Everyone, please put up your replies in the chat box if things are clear to you. How we take up decision variable. So decision variable हमेशा starting में आएगा और product को सिर्फ नाम से replace करना है.
वेरी सिंपल विद दैट. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Okay, so objective function will be what? Max z is equal to, why max z? Because profit है and it is denominated by the variable called as z. कुछ भी रहने दो, कोई भी ऑब्जेक्टिव रहने दो, ऑब्जेक्टिव will be denominated with the variable called as z. Okay, now profit per unit is 50. Now 50 into how much? 50 into x, because profit a का क्या है हमको नहीं पता है, we don't know, we have to find out. I mean 50 is given, but number of quantities are given. Our number of quantities given. Yes, our number of quantities given. दिया है क्या क्वांटिटी किधर भी? क्वांटिटी दिया है क्या? No. So this is the equation. When we get x and y, we will substitute this and then we'll find the answer. Is that clear to all? Is this equation clear to all? Objective function का equation clear है? Please put up a yes in the chat box if that is clear to you all. Right? So let it be any products. You don't know the number of products, you take it as x. You don't know the number of products to the other one, you take it as y. अब यहाँ पे 3 होते तो हम लोग z भी लेते थे. If it could have been c, a, b and c, you could have taken z as well. Are you understanding this? Yes. Okay, is that clear to you all? Okay, then last part for the formulation, constraints. So how you solve the constraints now? Okay, I'm going to switch back again. If you see this, to manufacture 1 unit of A and B, A, 1.5 machine hours are required and 2.5 labor hours are required. I'm making a column now. MH, LH, okay, product, okay. So I'm writing your A and B. For 1 unit of A, how much machine hours are required? 1.5 and 2.5. So I'm writing besides this, A के बाजू में 1.5, 2.5. Is that clear to all? And for B, 2.5 and 1.5. Is this clear to all? Is this clear to all? It's very simple. जो statement में दिया है ना वही मैंने एक tabular form में डाला है. I have put this up in a tabular form. Okay, now यहाँ पे ना कुछ limitation दिया है कि in a month 300 machine hours and 240 labor hours are only available. So in a month 300 machine hours. तो machine hours कहाँ पे है? यहाँ पे है. You see this machine hours? I marked the arrow. So इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? 300. और labor hours का कितना है? 240. Okay. So this is what I'll write, availability. What I will write? Availability. Now what sign I will use? What sign am I going to use? So this is maximum availability. This is नहीं sign की बात कर रहा हूँ मैं. You are right with the max availability, but sign. I'm formulating the equation. You will understand. Okay. So now product A is what? X. Product B is what? Y. Okay. Z नहीं आएगा चरण. Z यहाँ पे नहीं आता है. Z सिर्फ प्रॉफिट है ना, वो वहाँ पे ही आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. सो नंबर वन इक्वेशन 1.5 x1 plus 2.5 x2. Now can you use the machine more than 300 hours? Can you use the machine more than 300 hours? No. So this should be less than or equal to 300. I hope you understand this. It's very clear. मशीन तुम्हारा 300 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है, 300 से कम ही करना पड़ेगा, तो लेस देन आएगा. ये तुम्हारे दो मशीन्स आ गए जिसको मैंने फॉर्मुलेट किया. सेकेंड वाला इक्वेशन 2.5 x1 plus 1.5 x2 लेस देन इक्वल टू 240. यू लुक
add this in this way. Okay, this is the tabular form converted into the constant. So this is actual, this is the rough work. This one is the rough work. Okay, and this is the fair work, the 1 and 2. Okay, and last we'll write x1, y1 y2 क्यों आएगा? y1 y2 नहीं आएगा. अगर तुम लोग ने, हाँ, इफ यू वांट टू टेक एनी वेरिएबल यू कैन टेक दैट, बट स्कूल में कैसा होता था कि हम लोग एक्स एंड वाई यूज करते थे. ओके, सो योर हम लोग क्या कर रहे हैं, x1 कॉमा x2 यूज कर रहे हैं. बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, x एंड x ऐसे कॉमन नहीं है. बोथ आर वेरिएबल ऑफ x बट बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, बोथ आर डिफरेंट. ये x और y जैसा है ना, वैसे ही x1 एंड x2 है. समझ में आ रहा है? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. x1 और 2, 1 एंड 2 है ना. Okay, we cannot take x and y over here because the method suggests that in LPP we are supposed to take, for us, yeah, that is remaining x1 and x2 comma x2 less than equal to 0. कहाँ पे y कंसिडर किया भाई? अरे वो सिर्फ बताने के लिए किया था तुम लोग को, वो सिर्फ बताने के लिए किया है. ये डिसीजन वेरिएबल x है, इसको तुम दूसरे को x1 कॉमा x2 लो इसको. जिशान, उसे बताने के लिए किया था कि स्कूल में हम कैसे करते थे, दो वेरिएबल्स को हम एक्स और वाई कंसिडर करते थे. यहाँ पे हम x1 और x2 कंसिडर कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हम वेरिएबल्स को सिर्फ नाम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि वो मेथड अपना वैसा है. फॉर ऑपरेशन रिसर्च द मेथड इज लाइक कि ये हमको इसी तरीके से करना है. x1 एंड x2 लेना है, x3 लेना है, तीन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 3 लेना है. ठीक है, सम समझ गए सब लोग? तो ये हमारा सम खत्म हो गया, छोटा सा सम है. ठीक है, तुमको कॉपी करना है, कॉपी कर लो पहले. हाँ, दैट्स इट चरण. मतलब स्टार्टिंग का पार्ट है ना सम का, एक्चुअल सम नहीं है ये सिर्फ बेस पार्ट है. मतलब सम स्टार्ट कैसे करना है, हाउ यू हैव टू स्टार्ट द सम, दैट इज दिस पार्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. ओके, आई एम गिविंग आउट वन मोर. अभी 3 प्रोडक्ट वाला लेते हैं. अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्ट्स A B C. Okay, so for manufacturing, 3 raw materials P, Q, R are used. Okay, profit per unit, profit per unit A 5, B 3, C 4. This is in rupees, huh? Okay, it's all in rupees. Okay, now the resource requirement. Okay, I'm giving it as follows. I'm writing it down, making the table directly. Okay, so one is raw material. Okay, next is product. Okay, P, Q, R, A, B, C, 20, 50, 20, 30, 30, 20, 40. Okay, this is already a part of the question. I've done nothing. It's already a part of question. Okay, then
Okay, additional things which are given are maximum availability for P is 80 units, for Q is 100 units, comma R is 150 units. Okay, is that clear? Is that clear to all? Okay, this is the question now. This completely is a question. Okay, just take a look. Company has three products. Now you will tell me what will be the decision variables. You will tell me what will be the decision variables. Yes. What will be the decision variables? Charan? Okay, Sohail has replied x1, x2 and x3. Great. ओके फिर मुझे बताओ प्रॉफिट क्या आएगा. प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट आई मीन सॉरी, फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? तो डिसीजन वेरिएबल्स आर डन. हाँ, जेड तो आएगा, बट व्हाट जेड क्या मीन? जेड मैक्स जेड दो ही होगा इसमें. इट विल बी ओनली टू. वन, it is going to be either maximum or it's going to be minimum, so it's going to be max z or min z. Yes, since objective is profit maximization, max z आएगा. Very good. Mohita, can you please reply by tagging it to everyone? Mohita, Mohita, can you please reply by tagging it to everyone? Okay, Kajal has replied. Okay, great. Max Z. Is that clear to all? I'm going to write it on the screen as well, but I'm just, yeah. Okay. So यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहला मेरा डिसीजन वेरिएबल. ओके, डिसीजन वेरिएबल लिखा. तो डिसीजन वेरिएबल में क्या आएगा? लेट, मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा. लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए बी x1. We have understood with decision variables. What are decision variables? These are unknowns that we are supposed to find out from the variables. Objective function consists of min and max. Okay. Constants. Is that clear to all of you?
Yes, Burhanuddin. Burhanuddin, I'm unmuting you since I want to clear your confusion. Can यस सर. हाँ, क्या कंफ्यूजन है बोलो ना. सर मिन या मैक्स कब मतलब डिसाइड करना है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि शायद सिंपल है. से ये एक मिनट एक ऑब्जेक्टिव के मिनट. ऊपर डिपेंड करता है ना. एकदम सिंपल है. बिजनेस में मिनिमाइज क्या करेंगे? कॉस्ट को हमेशा कम करेंगे, मतलब मिनिमाइज करेंगे. यस सर. टाइम को हमेशा कम करेंगे यानी मिनिमाइज करेंगे. यस. प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे. यस सर. ठीक है, रेवेन्यू को हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे. इतनी ही चीज़ है उसके अंदर. ओके कॉस्ट सर, तो हमने अभी तक टाइम और कॉस्ट का नहीं किया है ना. है ही नहीं अपने को. कॉस्ट किया हम लोगों ओके. ने, कॉस्ट किया है. मिनिमाइज जो था वो कॉस्ट वाला था, टाइम वाला आया ही नहीं था तुमको. तो मैंने फर्स्ट ओके. लेक्चर में बताया हुआ था, ये शायद तुम्हारा मिस आउट हो गया रहेगा. कोई वो टाइम में शायद तुम नहीं रहोगे, ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो मे भी मिस आउट हो गया रहेगा, इसलिए मैंने वापस से ये चीज़ बता दिया कि टाइम और कॉस्ट है ये हमेशा मिनिमाइज होता है. प्रॉफिट और रेवेन्यू हमेशा मैक्सिमाइज होता है. ओके सर. ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिखेगा ना कॉस्ट, तो मिनिमाइज कर लेने का. रिटर्न दिखा तो मैक्सिमाइज कर लेने का. अभी कोई ओके एक सर. ऐसा सम आएगा जिसमें ना कॉस्ट और रिटर्न प्रॉफिट दोनों दिया है, तो इस टाइप के सम में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ले लेने का. बहुत रेयर ओके चांसेस सर. है, बहुत रेयर चांसेस है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने ले लेना. ठीक ओके है. सर. और टाइम वाला है ही नहीं ना. नहीं, टाइम वाला है ही नहीं. ओके सर. ठीक है. थैंक यू. So guys, our formulation chapter is done. So next lecture we'll be starting with graphical. So I want you all to take, if you are having graph, it will be good, so that I can solve the problem effectively. I will be, yeah, I'll be doing that in the whiteboard, but you will have to do it on your graph paper. Okay. So the further part of this chapter will be graphical. Okay, any doubts you can ask me now. Next lecture we'll be starting with the graph. क्वेश्चन देखा नहीं क्या चरण? कंपनी has three products A, B and C. It's very clear. लिखा है ना मैंने. रॉ मटेरियल PQR है, रिसोर्स अलग है. चरण. ओके. अभी रिसोर्स का बात मैं अभी करूँगा, अभी तक किया नहीं है मैंने कुछ. ठीक है. सो नाउ रफ वर्क के लिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है. ये दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन को तुम लोगों को? रफ वर्क को मैं यही यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है. सो PQNR दिख रहा है अभी यहाँ पे सबको? PQNR. ओके. ए मेरा क्या है? X1. बी मेरा X2 है. सी X3 है. मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 80. तो किसका पी का बोला है ना, तो पी को मार्क करो यहाँ पे. पी का कितना है? पी का कितना है? 80. क्यू का कितना है? 100. और आर का कितना है? 150. सो यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? चरण. चरण, इज इट क्लियर? सो हाउ विल वी फॉर्मुलेट दिस इक्वेशन? कांस्टेंट, ये मेरे कांस्टेंट का पार्ट मैं यहीं पे कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग दिस डिफरेंटली नाउ. ओके. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर रखूंगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके. what are objective function? 5x1 3x2 4x3. 5x1 plus 3x2 plus 4x3 max z is equal to. Is that clear? Now what will be these constants? Number one constant क्या रहेगा, कौन बताएगा? Anyone? Zenith, can you tell me the constant number one? यहाँ से एरो मार्किंग कैसे देखो? मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बोला है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्स अवेलेबिलिटी. मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बोला, साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा? केस बुरहानुद्दीन, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बोला है राइट, मतलब 80 यूनिट्स यूज कर सकते थे, 80 या 80 से कम करना पड़ेगा. सो साइन विल बी विच? साइन विल बी विच? लेस देन व्हाट? मैक्स जेड. मैक्स जेड का काम हो गया अपना.
मैक्स जेड इज ऑलरेडी डन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि बोला है ना कि 80 यूनिट्स यूज़ करना है, 80 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते मतलब कम करना पड़ेगा, ओके। सो दिस विल बी नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड मोहिता, 0x1 इज नॉट रिक्वायर्ड, मोहिता इज रिटन ओवर योर 0x1 प्लस 20x2 प्लस 30x3, बट 0x1 नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है, अगर लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी चलेगा, ओके। सो फॉर दोज हु आर टेकिंग 0x1 यू आर राइट, दोज आर नॉट टेकिंग यू आर ऑल्सो राइट, ठीक है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, 20x2 plus 30x3 less than or equal to 80. Second equation, 20x1 plus 30x2 plus 20x3 less than equal to 100. Or third equation, 50x1 plus 40x3 less than equal to 150, x1 comma x2 comma x3 less than equal to 0. Now this is non-negativity, the last part what we are writing, it says that answer अपना नेगेटिव में नहीं आ सकता, एक मिनट, हाँ, नॉन नेगेटिव हमने साइन थोड़ा उल्टा ले लिया, इट शुड से दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके ओके, x1 x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले वाले सब में भी सेम किया सबने, मैंने गलती से लेस देन साइन डाल दिया, इट शुड इज ग्रेटर देन, ओके, इट सेज द नॉन नेगेटिविटी फैक्टर, इज दैट क्लियर टू ऑल, इज दैट क्लियर टू ऑल, ओके विल डू वन मोर, यस, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियरली समझ में आ रहा है ना, यस, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। अभी थर्ड सम करते हैं, ठीक है, अभी दो मैक्सिमाइजेशन वाले कराए मैंने प्रॉब्लम, ये सुनो, दो मैक्सिमाइजेशन वाले कराए ना, अभी थर्ड वन करते हैं, विल डू मिनिमाइजेशन वाला सम, ठीक है। सो जस्ट राइटिंग डाउन, इन द मीन टाइम यू ऑल्सो कैन डू इट, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो टू न्यूट्रिएंट्स N1 and N2 are recommended, okay, for athletes which are available in two products, okay, P1 and P2, ठीक है। So what are the decision variables now? You can start simultaneously, huh? What are decision variables? What are decision variables? Exactly. So you can write it down. डिसीजन वेरिएबल तुम लोग लिख सकते हो, तब तक मैं आगे का सम लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट पर 1 यूनिट फॉर P1 and P2 is ₹100 and ₹150.
So so cost per 1 unit of P1 and P2 is rupees 100 and rupees 150 respectively. 1 unit of P1 contains 3 units of N1, nutrient 1, and 5 units of N2. Okay. Whereas 1 unit of P2 contains 5 units of N1 and 7 units of N2. Okay, formulate LPP. It's a very different sum now. Okay, it's completely reverse what we had done. Okay, last I think I'll take 2-3 more minutes of yours because to wind up this sum. Okay, quickly tell me the decision variables, guys. Quickly tell me the decision variables. Okay, so decision variables. I'm writing in short. Huh? I'm writing in short. P1 x1, P2 x2. Objective function. Quick. Objective function. क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्या है? min z. वेरी गुड काजल. वाई काजल? min z क्यों लिया? min z क्यों लिया? कॉस्ट शुड बी मिनिमम. वेरी गुड, क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट. ठीक है, अंडरस्टूड. एनीबडी एल्स? एनी डाउट्स? ओके, नाउ द कॉन्स्टेंट पार्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू इन रफ टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म राइट में करता हूँ, फेयर में मैं लेफ्ट में ही करूँगा. ठीक है, इज इट फाइन? यस. सो आई राइट ओवर हियर 1. एक साइड में लिख रहा हूँ P1. कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं है. P1 N1 N2. ठीक है, P1 P2 N1 N2. अभी क्या बोला है? कॉस्ट पर 1 यूनिट ऑफ P1. तो प्रोडक्ट 1 का वो तो हो गया, छोड़ो. 1 यूनिट ऑफ P1, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया. 1 यूनिट ऑफ P1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ N1 and 5 units of N2. Is it clear? 1 unit of P2 contains 5 units of N1 and 7 units of N2. Is this clear? 3 5 5 7. ये समझ में आया सबको? I want a reply from everyone. There are a lot of people in the class. If you are clear, please let me know. मैंने बस वो स्टेटमेंट से ही उसको टैबुलर फॉर्म में डाला, 1 यूनिट ऑफ P1 वाले को और 1 यूनिट ऑफ P2 दोनों को. ठीक है, अभी इसका डिफिकल्टी क्या है? इसका डिफिकल्टी है यहाँ पे. इफ़ यू सी दिस पार्ट, मिनिमम डेली इनटेक फॉर N1 and N2 इज 30 and 40 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. सो N1 के नीचे मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 30. और N2 के नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 40. सो मिनिमम इनटेक बोला है. मिनिमम मतलब क्या? एटलीस्ट 30. तो 30 से कम होगा तो चलेगा क्या? मिनिमम 30 बोला है, चलेगा? नो. व्हाट? यस. नो ना, मिनिमम 30 बोला है, होना चाहिए. सो हमको 30 या 30 से ज़्यादा, 30 और मोर देन 30, 30 or more than 30 we have to take, because minimum recommended is 30. You cannot go below 30, but you can go above 30. Is that clear? So what will be the constant formulation? P1 क्या है अपना? x1. और P2 क्या है? x2. So constraint will be like this: 3x1 plus 5x2 less than equal to, or will it be less than equal to? Will it be less than equal to? It will be more than equal to 30. And second, 5x1 plus 7x2 more than equal to 40. x1 comma x2 greater than equal to 0. Non-negativity. Constraint number 1, constraint number 2. Have you understood this?
Yes, everyone, have you all understood this? Okay, any doubts in today's lecture? Any doubts in today's lecture? Any doubts in today's lecture? Any questions regarding LPP sir, why we are doing this, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? The purpose is clear. Is the purpose clear behind this solving of the problem? LPP. If you see the questions, if you see the questions, questions are a bit confusing. Why? Because it's the first sum na, Charan. First time you're solving this, so it will take a bit of practice. Okay, it will take a bit of practice. You need to understand the statements. Okay, I hope you have solved this simultaneous equations in the school. So similarly, these sums are the same. Okay, and those people who have taken maths in 12th standard, I mean, they must have had this chapter, LPP. I'm not sure how many of you must have had that. Okay, but in case people, you have any doubts, you can come up in between. I'm not asking you to, come in the end and ask the doubts. Stop me there in the between, and you can ask me doubts immediately, because there's no point doing the sum with having doubts and answering later on. Okay, so whenever there's a doubt, you just come up with a doubt and we'll solve it immediately. So anyways, now this complete PPT I'm uploading on Google Drive. Okay, you can take a look on the sums. Okay, the book we are going to refer is Vipul Prakashan. Which we are going to refer is Vipul Prakashan. Okay, so make sure you buy the book, because a lot of things, study material will be covered from that book only. Okay, and since MCQs will be asked, we need to understand that conceptual part has to be covered up. Okay, the sums are practical, but actually you are going to get the theoretical part of this particular sum. Most of it will be practical as well, but since it's a MCQ part, you'll get more of theoretical questions based on this practicals. Okay, anyways, so the later part we'll do in the next lecture. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Okay, objective function. Okay, and constant. Please explain objective function. Cost is given 6, 3, 6 unit of x, f1 यानी x1 and f2 यानी x2. So 6 into f1 or 3 into f2, simple. 6x1 plus 3x2. So 50 plus 25, why? Eh? This is wrong. Mohita, minimize z is wrong. Mohita, Mohita, minimize z is wrong. Minimize cost होता है. ये मैंने लिखा है ना 6x1 plus 3x2. This is cost, ये वाला कंसिडर करो. ओके, कांस्टेंट के लिए आएगा, टेबल बनाओ पहला.
B1 B2 3 B1 4 B2 5 B1 3 B2. Cost per unit. Minimum daily prescription of B1 and B2 is 50 and 60. So B1, mark B1 50 and mark B2 60 minimum intake. Is that clear? F1 is your x1, F2 is x2. So start making constant 3x1 plus 4x2, sorry 5x2 greater than or equal to 50. हाँ I got it काजल चलेगा वो. Is that clear? Is that clear to all? Is everyone clear with that sum? Yes, please take a look at this sum. Just read through the sum and understand it. Okay, this is a portfolio selection problem. Tell me the decision variables. Tell me the decision variables. A and B. Good. Amount. This is amount. Huh? Amount invested in A is x1. Amount invested in B is x2. Objective function. What is the objective function? This is a complex sum. Okay.
प्रॉफिट, वेरी गुड बुरानुद्दीन, करेक्ट प्रॉफिट, बट यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी ओके 0.09 x1 प्लस 0.15 x2 max z is equal to, is that clear? This is your 9%, that is 0.09 x1, and this is your 15%. ओके और ये कांस्टेंट के लिए वापस से यूज करना है. Is that clear? Is that clear to all? Okay. Total amount to be invested is 5 lakh. So for the first equation, what are we going to do? Total amount, yani x1 plus x2 is equal to 5 lakhs. There is no sign less than or greater than, because it is clearly mentioned total amount to be invested is rupees 5 lakh. Is that clear to all? Okay. The second, this is done now. This is done. Total amount to be invested is 5 lakh is done. Total minimum returns on investment should be 12%. Okay, so 12% of what? 12% of what? You are investing 5 lakhs, so minimum returns. Okay, minimum returns will be 12% of 5 lakhs. That is how much? That is equals to 60,000. Is that clear? But how will we write now? Returns के लिए हमारे पास क्या था? 0.09% परसेंट नहीं, x1 plus 0.15 x2, 0.09 x1 plus 0.15 x2. ओके, मिनिमम रिटर्न बोला मतलब 60,000 तो चाहिए, उसके ऊपर जाएगा चलेगा? Is it okay? Is it okay we if we go above काजल 0.12 जो तुमने लिखा है ना वो रॉन्ग है. वी दोनों साइड में डेसिमल्स में नहीं आएगा, एक साइड तो नंबर चाहिए ना, सॉल्व कैसे करोगे इक्वेशन? सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000. ये किया ना सॉल्व यहाँ पे? काजल प्लीज लुक एट दिस. 12% is 0.12 of 50,000, 5 lakh. So 0.12 into 5 lakh is 60,000. Got it? तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, अभी थर्ड वन. ओके, सिक्योरिटी ए गिव्स रिस्क फैक्टर 5, रिस्क फैक्टर लेना है, रिस्क फैक्टर वाला इज 5, सिक्योरिटी बी का रिस्क फैक्टर है 8 और कंबाइंड रिस्क फैक्टर कितना है? नॉट मोर देन 6. सो हाउ मच विल बी दिस? थर्ड 5x1 प्लस 8x2, 6, नॉट मोर देन 6 बोला है, मतलब कितना होगा नॉट मोर देन 6? मतलब क्या आएगा? साइन विल बी लेस देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 5 lakh. ओके, लेस देन आएगा. So answer is 5x1 plus 8x2 less than equal to 30 lakhs. Is that clear? Is that clear? Risk is always in times. You cannot just take 6. ओके 5 लाख तुम्हारा डाला हुआ इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसका 6 टाइम्स तुम्हारा रिस्क है, मतलब टोटल रिस्क कितना है? 30 lakhs.
Is that clear to all? Charan, I'm unmuting you. सर और एक बार एक्सप्लेन करो ना सर मुझे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ? आ, देख या पहले सर बस बस एक बार सम में हाँ। ना, पहले देख क्या क्या दिया है, मैं तेरे को इधर बता देता हूँ, साइड में ऊपर लिख रहा हम्म। हूँ। हाँ सर। 9% दिया है, हम्म। 15% दिया है, ठीक है। या तो प्रॉफिट है 9% और 15%। सो इफ यू वांट टू सॉल्व द सम, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 9% एंड 15%। सो दैट पार्ट इज क्लियर टू यू? दिस पार्ट इज रिटर्न पार्ट ना सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाँ, रिटर्न ऑन 9 एंड इन्वेस्टमेंट पार्ट 15 क्लियर है, या। 9% हाँ 15% हाँ। वाला। ठीक है, या सर। अभी कांस्टेंट में क्या बोला है कि ये जब दोनों में मिक्स करूंगा, यानी ए हम्म। का 9% और बी का 15%, मुझे कंबाइन मिला के 12% मिलेगा। लेकिन 12% किसका मिलेगा? 5 लाख का। 12% ऑफ 5 lakhs, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 60,000। ये हाँ तुम्हारा सर। कांस्टेंट नंबर 2 हो गया। 0.09x1, 0.15x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000। क्योंकि तुम आइडियली सिर्फ 12% नहीं रख सकते। हम्म। समझ में आ रहा है? 9% प्लस 15% इज इक्वल टू 12%, ये सेंस नहीं बनता है। ओके, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस वेरिएबल। ये x1 तुमको मालूम नहीं है, x2 मालूम नहीं है, हाँ सर। ठीक है। इसके लिए तुम एक साइड में अननोन वेरिएबल होता है, दूसरे साइड में भी अननोन हो नहीं सकता ना। एक साइड हम्म। में तो नंबर चाहिए ना सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को। इसके लिए हम लोग को हाँ 12% सर। ऑफ 5 लाख लेना पड़ा। ठीक है, तो ये समझ गया। ऊपर वाला हाँ समझ हाँ। गया, फर्स्ट वन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 लाख, बिकॉज उसमें या मेंशनड सर। है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है करके। ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है, ईज बोला है, ईज मतलब इज इक्वल टू। समझा? अभी हाँ थर्ड सर। वाला जो है रिस्क ग्रेड वाला है। तो फर्स्ट का रिस्क ग्रेड कितना है? 5 है, यानी x1 के लिए 5 है, 5 x2 के लिए 8 है, कंबाइन दोनों का 8। मिला के 6 है। लेकिन मैं सिर्फ 6 नहीं रख सकता, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज इन नंबर ऑफ टाइम्स। सो इफ आई से दैट रिस्क इज 5 टाइम्स, मैंने इन्वेस्ट कितना किया है? 5 lakhs। तो रिस्क कितना हो गया? 25 lakhs। यहाँ पे रिस्क कितना बोला है? 6 टाइम्स, मतलब 6 मैंने टाइम्स। मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 5 lakhs। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सर। पे रिटर्न से मल्टीप्लाई किया, ये वाले यहाँ पे देखो, इधर हाँ मैंने सर। रिटर्न से मल्टीप्लाई किया ना, ये मिनिमम रिटर्न 12% ऑफ 5 लाख, वैसे ही मैंने यहाँ पे रिस्क के लिए भी उससे मल्टीप्लाई कर लिया। 6 टाइम्स ऑफ 5 थ्री लाख 5 लाख, तो 30 lakhs आ गया। या 30 लाख। समझ में आया? हाँ सर। ओके, इज एवरीवन डन विद दिस? इज एवरीवन डन विद दिस? If yes, I want you all to solve this sum on your own. Okay, same kind of a sum. This is the same kind of a sum, but yeah, okay, fine. Once you're done, let me know.
Okay, so everyone is done.